चलिए बेटा, अब मैं आपको सिखाता हूँ इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन ऑल द रेंजेस. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी नाउ ऑन ऑल द रेंजेस. यहाँ पर मैं आपको जो एलएम की डिफरेंट रेंजेस हैं उनकी नेचर भी आपको सिखाने की मेरी कोशिश रहेगी. वेल गाइस, from the last video we must understand that there are three ranges of LM. This one is called liquidity trap or Canadian range, this is intermediate range and this one is classical range. तो अब बात करते हैं what will be the effect of monetary policy on all these ranges. Well guys, first of all I should have an IS here. So this is IS1, this is Y1, this is I1, this is E1. Now guys, what about the effect of monetary policy? वेल अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें तो आप उसमें पाएंगे मैंने बात की थी वहाँ पर what will be the effect of fiscal policy on all the ranges, and while explaining that I used expansionary fiscal policy, if you guys remember that. तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. उसका इफेक्ट देखेंगे तीनों रेंजेस के अंदर. अब एक बात सब लोगों ने ध्यान से समझ लेनी है, ये जो लिक्विडिटी ट्रैप है जिसको हम कैनेडियन रेंज कहते हैं बच्चों, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी अपने लोएस्ट पर है. अब अगर आप पीछे से मनी सप्लाई बढ़ा भी दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे नीचे अब नहीं जा सकता. तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताते हैं. देखिए, कैनेडियन रेंज एक इंस्टेंस है ग्रेट डिप्रेशन का. तो ग्रेट डिप्रेशन के अंदर मंडियों में माल ही माल था बट देयर वाज नो बायर. अब आप बताइए, अगर एज अ प्रोड्यूसर मेरा माल मार्केट में पड़ा है, बिक नहीं रहा, तो आप बताइए क्या मैं नया माल उठाने के लिए और बोरोइंग करूँगा? वेल आई डोंट थिंक सो. तो अगर मैं बोरो ही नहीं करूँगा तो कमर्शियल बैंक्स पैसा लेंड करना उनका काम है. दे विल ट्राई टू सेल मी दैट मनी, दे विल ट्राई टू लेंड मी दैट मनी. फॉर दैट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे. तो उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, करते गए करते गए करते गए, बट मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी एज अ प्रोड्यूसर नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरा माल मंडी में बिक नहीं रहा है. सो करते करते रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम ही लोएस्ट आ गया बच्चे, एंड दिस इज दैट लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है कुछ किताबों में. आप ये समझ लीजिए कि इसके नीचे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गया तो उसका मतलब होगा कि आपने बैंक से लोन लिया और बैंक ही आपको इंटरेस्ट दे रहा है. सो गाइस, अब आते हैं इफेक्ट पर. सो मैं आपसे कहूँगा कैनेडियन रेंज मॉनेटरी पॉलिसी नॉट इफेक्टिव. वाई? बिकॉज मेरा बच्चा देर विल बी नो चेंज हेयर. अब अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पर हम इफेक्टिवनेस किस बात से जज करते थे कि क्राउडिंग आउट है या नहीं. यहाँ पर हम इस बात से जज करेंगे कि इनकम में चेंज आया है या नहीं. आप देख सकेंगे यहाँ पर जब आप मनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ाने से यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, बट आई एम अफ्रेड दैट्स नॉट हैपनिंग हियर क्योंकि इसके नीचे जा नहीं सकता रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो देयर शैल बी नो चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दस देयर शैल बी नो चेंज इन इनकम एज वेल. अब बात करते हैं इंटरमीडिएट रेंज की. ये है आपका IS2, Y2 and that's say I2 and that's E2. Now suppose there is an expansionary monetary policy taking place. So LM rightward shift हो गया. It's like the normal one. तो इसको ट्रांसमिशन मैकेनिज्म भी कहते हैं जो मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं आप. So here as you can see rate of interest has fallen down and your income has increased. So I would say that this intermediate range, our monetary policy is partly effective. I would say it is partly effective. Why it is partly effective? Because there is some change in income. अब बात कर ली जाए गाइस क्लासिकल रेंज की. तो आप क्लासिकल रेंज में देखेंगे LM वर्टिकल है. सबसे पहले हम IS3 बना लेते हैं. दैट्स Y4, दैट्स I4, दैट्स E4. आइए अभी बात करते हैं. इससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें LM वर्टिकल क्यों होता है. वेल गाइस, क्लासिकल रेंज में ये माना जाता है दैट Y इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर एंड K पूरी तरह से यूटिलाइज है, L पूरी तरह से यूटिलाइज है. सो Y इज इक्वल टू Y बार. सो इसलिए फिक्स्ड आउटपुट के साथ LM वर्टिकल रखा जाता है. आइए बात करते हैं, और मैंने अपने नोट्स में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं उसमें.
आप देख सकते हैं यहाँ पर ये LM शिफ्ट हुआ, एंड जैसे ही LM शिफ्ट हुआ गाइस, यू कैन सी rate of interest has gone down and income has increased Y5 and E5. So what is the catch then? The catch is, under classical range, monetary policy is very effective because the change in income is a huge one. सो अगर आप कंपेयर करेंगे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को मेरे बच्चों, तो इंटरमीडिएट रेंज में दोनों पार्शली इफेक्टिव हैं, लेकिन एक्सट्रीम रेंजेस में अपोजिट हैं. हेयर इफ यू रिमेंबर, फिजिकल पॉलिसी वाज डैम गुड, हेयर मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट गुड. हेयर फिजिकल पॉलिसी वाज डेड बिकॉज फुल क्राउडिंग आउट वाज देयर, बट हेयर मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी इफेक्टिव. अब अगर सेकेंड सेम में आपको याद हो, आपको एक टॉपिक कराया गया था केनेजियन और क्लासिकल स्कूल में डिफरेंस, तो आपको याद होगा मेरा बच्चा, क्लासिकल दे यूज टू हेट गवर्नमेंट, इसलिए याद करिए फिजिकल पॉलिसी के अंदर, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो क्लासिकल रेंज में फिजिकल पॉलिसी वाज नॉट इफेक्टिव. So guys, this is how you can explain monetary policy effect in all the ranges. In my notes, I have explained all the ranges differently, separately. So that should give you a more detailed explanation about these. So now I shall be talking about two important, very important applications now. So we shall start with the first one. And the first one is so very important and so very interesting. This is called investment subsidy. Investment subsidy. Let me teach you investment subsidy. Well guys, just imagine that we have these two panels. Here I've got IS, here I've got LM. Suppose this is the rate of interest, this is income, this is I, this is Q, and that's investment curve minded. So here, like always, you are taking ROI, here you are taking income, here again you are taking ROI, and here you are taking investment. So we'll now talk about investment subsidy. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. आपको एक प्लांट खरीदना है या मशीन खरीदना है जो 10 लाख रुपीस की है. You want to buy a machinery which cost you 10 lakh rupees. Now suppose the market rate of interest is 10%, and we assume that you borrow that money in order to fund your investment. Now the catch is, government is giving you one option. Government says, okay, we'll pay you a subsidy of 3 lakh rupees. We'll pay you a subsidy of 3 lakh rupees. And then if we do so, your rate of interest shall be more. दोबारा से सुन लीजिए. 10 lakh machinery, you need to buy a machinery which costs 10 lakh bucks, 10 lakh rupees, and we assume that you're gonna borrow that money. So obviously if you borrow the money, you'll have to pay the rate of interest, and we are assuming that rate of interest to be 10%. Now government says, okay, we'll fund 3 lakh rupees, we'll give you investment subsidy of 3 lakh rupees. So don't you think, if government provides you with investment subsidy, don't you think guys, that government expenditure shall increase? And if that happens, we all know that IS curve is gonna shift rightward, right guys? So if IS shifts rightward, this is how it's gonna look like. And as you can see, the rate of interest shall be more, right guys? Now see the magic. आइए अब आपके पास चलते हैं. आप बताइए 10 लाख की मशीन खरीदना पसंद करेंगे, 10 लाख की मशीन खरीदना पसंद करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, या गवर्नमेंट आपको 3 लाख की सब्सिडी देती है और आपको 7 लाख की मशीन पड़ेगी, बट वो जो 7 लाख आप बोरो करोगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा. यू टेल मी, would you love to borrow, would you like to borrow 10 lakh rupees at 10% rate of interest, or should I change the scenario? Let us assume that government is gonna pay you 3 lakh rupees as investment subsidy, thus you need to spend 7 lakh rupees, but then to borrow those 7 lakh rupees, the rate of interest is not 10% anymore, it is 12%. Now tell me, which one do you think is more feasible for you? Yes, you're right, 7 lakh.
सो दिस इज इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. यूजुअली क्या होता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. नॉट हेयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है. दैट्स इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. होप यू लाइक इट. दैट्स इन्वेस्टमेंट सब्सिडी. आइए एक और एप्लीकेशन सिखाते हैं अब आपको. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस. दिस इज पॉपुलरली नोन एज पॉलिसी मिक्स. Policy mix. Yeah. So let me give you an idea. Suppose this is IS, this is LM, this is I, this is Y, and this is equilibrium. Now suppose this is your full employment level. Obviously Y star is better than Y. So what can be done to achieve this? One way is to shift the IS, right? But the problem is, if I do this, my rate of interest shall increase, which I don't want. Okay, any other way? Let's see. This is again your IS, this is your LM, this is your I, this is your Y, and this is your Y star. So one more way is to use expansionary monetary policy, which will shift your LM towards right. But the problem is that rate of interest is gonna fall, which I don't want. So what can be done then? I dearly want to have Y star, but I also want to have rate of interest that is constant. So guys, let me give you the solution. This is Y, this is I, this is, my dear friends, Y star. See the magic. You can do this. See what's happening. Keep this. You can use expansionary fiscal policy, which will shift your IS rightward, and simultaneously you use expansionary monetary policy, which shifts your LM. So guys, this is called policy mix. You are using both fiscal and monetary policy together to achieve this Y star and keeping the rate of interest constant. I hope that helps. This is a policy mix. नाउ गाइस, मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकली क्राउडिंग आउट. वेल गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ एक न्यूमेरिकल शेयर किया था. मैं उसी न्यूमेरिकल पर आपको नई ये वाली चीज़ को सिखाता हूँ. वेल, इन आर एग्जाम्पल हमारे पास C था 100 + 0.9 YD, I था 600 - 30 I, G was 300, T was 1/3Y, MD was 0.4Y - 50I, M was 1040, and P is 2. सो हमने जो पहले सीखा था, पहले एक बार एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं गाइस. तो सबसे पहले हमने आपको कहा था कि अगर आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो आपको IS और LM को Y के टर्म्स में सॉल्व करना होगा. तो जब मैंने IS सॉल्व किया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है Y = AD C + I + G. तो मेरे बच्चा C मैंने यूज़ किया. फ्रॉम हेयर 100 + 0.9 YD, here you can see Y - TY + I + G, और फिर हमने इसको Y के टर्म्स में सॉल्व किया था. आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको ये कैसे सॉल्व किया गया वो हमने शो किया था. एक बार ये आप देख लीजिए. आई हैव जस्ट यूज C फ्रॉम द क्वेश्चन, I given in the question, G given in the question, and I have actually solved it in terms of Y. So this is IS equation, as they say. Now guys, हमने सॉल्व किया LM equation. So LM equation सॉल्व करने के लिए we did this. Please focus कीजिएगा guys. LM. So LM happens where MD is equal to MS. Okay. So KY - HI is equal to M/P. So that's MD, that's MS. Again Y के टर्म्स में सॉल्व किया गया. So IS करते हुए Y is equal to AD और Y is equal to C + I + G. C, I and G were given in the question. LM के लिए MD is equal to MS. Again we have MD in the question given and MS as well. So again MD is equal to MY. I have solved it again in terms of Y. So now I have IS and LM equations both solved in terms of Y. Now guys, this is what you can do. You can just put IS and LM, equate them together and get the rate of interest rolling. This is how I have done. You can watch my last video in order to get this. So now in order to get equilibrium level of income, you just need to put this rate of interest either in IS or either in LM equation, and you'll get your equilibrium level of income. I hope that helps. Now
I have actually drawn a diagram as well. So this is IS, this is LM, rate of interest was 6, and that was your income 2050. So then we talked about what if the government expenditure rises by 50, calculate the magnitude of shift in IS. Well guys, the magnitude of shift in IS stands for delta G into alpha G. Well mera bacha, alpha G stands for multiplier, and multiplier is 1 upon 1 minus C, 1 minus T. So taking the values from the question, I solved it 2.5, and then this whole magnitude of shift in IS thing was 125. Diagrammatically, magnitude of shift in IS shows that keeping the rate of interest constant, how much change in income you can end up with. So I hope यहाँ तक क्लियर है आप सबको. आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ इसी में कुछ नया. तो ध्यान लगाइएगा बच्चों. सपोज आपको बोला जाता है दैट योर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 2500. Your full employment level of income is 2500, and then he says how much delta G should increase to achieve this 2500. Mind it, your actual output was 2050, which you solved. I can show you that. This is how you solved it, 2050. Now your full employment level is 2500, so you want to be at 2500. Question says how much delta G should increase. So guys, get ready for the action then. Now we will be talking about a fiscal multiplier. So fiscal multiplier, well guys, it stands for delta Y upon delta G is equal to H alpha G upon H plus B alpha G into K. How to use it? I'll tell you. First of all, we know alpha G is 2.5. H, well guys, if you remember, मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा. देखिए ये क्वेश्चन था आपका MD KY minus HI. So this is your H, that's 50. Okay, so what about the other values? You can get the values from here. I'll be just putting that right here. So delta Y, this is 450. Why? Because you are at 2050, you want to be at 2500, right? Delta G I need to solve. Now mind it, this right hand side is fiscal multiplier. It will be used to get either this or this. H was 50, alpha G was 2.5. I solved it in the last one. H again 50 plus B and K. We'll see how what was the values. So this is B 30 and K is 0.4. Let's use those values. So 30, 2.5 and into 0.4. So I have used that so far, and this is 450 upon delta G. This comes up as 1.562, and delta G, by solving it, it will be 288. In order to achieve 2500 of income, you will be spending additional government expenditure equal to 288. I hope this is clear to you. I'll be telling you one more use of this fiscal multiplier. Want to know that? Okay. So this is I guess clear. अब हम करते हैं काम. ये मैंने आपको क्या सिखाया था? If GE rises by 50, calculate the magnitude of shift in IS. Now I change this question a bit. Now I write, if GE rises by 50, calculate the change in income. Calculate the change in income. Be street smart and you're gonna love this. टॉपिक को समझिएगा. If GE rises by 50, अभी हमने किया था calculate the magnitude of shift in IS, which says if rate of interest constant तो इनकम कितनी बढ़ेगी. लेकिन एक्चुअल इनकम ये नहीं होती. आपको पता है क्राउडिंग आउट होगा ही होगा, इंटरमीडिएट रेंज है. तो अब पेपर में सवाल आ गया, if GE rises by 50, then calculate the magnitude of shift in IS. That we are gonna talk about. तो ये मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. Please focus and focus hard. Please guys. So again I'm going to use the formula. You need to be really good about it. So first way of doing it is to change the IS itself. Well, IS was what? Y is equal to C plus I plus G. So I'm copying the values from here.
So it is gonna be 100 plus 0.9 y minus 1 by 3y plus I was 600 minus 30i. Now you need to be cautious. G is 300? No. What I'm gonna do is this. My question was if G rises by 50. So what can I do here is take G as 350. Because your G has risen by 50. So instead of 300, you'll be taking 350. So solving it, along the way, you'll be able to get something like this. 0.4y is equal to 1050 minded instead of 1000 minus 30i. Is that clear? Further solving it in terms of y shall give us this 0.4. Guys, solving it will give us y is equal to 2625 minus 75i. Now as far as LM is concerned, because ना तो MD में कोई चेंज आया ना ही MS में, तो LM की इक्वेशन हम as it is ले लेते हैं, which is 1300 plus 125i. So first of all, I'm gonna compare IS with LM so that I have this 75i, 1300 plus 125i. Solving it, I get rate of interest as this. Guys, just hang in there. We're just there. Now, in order to get income, suppose I put it in LM. You can either put in LM or IS. That's totally your wish. And what you get is this 2128. Well, my dear friends, this is income, actual change in income when your G increases by 50. I'll be telling you one more way of doing it. First of all, see what happens here. 2128, my dear friends, this is what's happening. 2128 and this is 6.625. So actual income is this 2128 and this, as we all know, shall be crowding out. Now if you don't want to use that long way, that long handle, you say okay, this is a bit tricky, I don't want to use that long method, I need something short. No problems. You can use fiscal multiplier again. Delta y upon delta g is equal to h alpha g upon h plus b alpha g into k. And this time around, well guys, delta y I need to solve. Delta g is 50, h was 50, 2.5, 50 plus 30. If I'm not wrong, it is 2.5 and it is 0.4. So delta y upon 50 is equal to 1.562. And my dear friends, so delta y will be equal to 50 into 1.162. And see the magic. The magic is that will be this difference, which is what? 78 rupees. So that's 78 rupees. Round off. So guys, if you want to actually know the change in income, what will be the actual change in income, use this. And if you use this particular thing, using the whole thing together, you'll be able to get the actual income which the economy is gonna be attaining. So this is gonna give you the last income which the economy is going to end up with. This is gonna give you the change in income, and that by adding this change in income to the original, you can get this value. So there is one more formula which I should discuss with you, and after that it's more or less over. And that will be what is monetary multiplier. Abhi to tha fiscal multiplier. It shall be delta y upon delta m is equal to b alpha g upon h into b alpha g into k. So ऊपर h की जगह b हो जाता है. If you want the derivations, I'll share that in the group. But आपके syllabus में नहीं है, इसलिए I'm not actually going that way. But still, if you want these derivations, I'll be more than happy to help you. So I hope that helps.